Hello students, welcome back. So today we are going to start the poem Fifth, No Men Are Found. And this poem is written by James Kirkup. And the title No Men Are Found means that the no man belongs to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood through this poem. And in this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, it's in equal measure. We also say that it is a peace poem. So in this poem, No Men Are Found, the poet James Kirkup wants to raise the concept of universal brotherhood. इस कविता में जेम्स किरकप जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देना चाहता है. वो कहना चाह रहा है, वो कहता है कि इस दुनिया में सारे के सारे लोग जो हैं वो सेम हैं, कोई भी अलग नहीं है. सभी के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँख हैं, दो नाक हैं, दो हाथ हैं काम करने के लिए. सभी के सभी जो लोग हैं है ना सोचते हैं, सभी के सभी लोग जो हैं वो काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए. सारे के सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं. तो हाउ कैन वी से दिस इज एन अमेरिकन, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये इंडियन है, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि सारे के सारे जो हैं लोग वो सेम हैं. देयर इज नो चेंज इन देम, कोई भी चेंज नहीं है किसी में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फाउंड, beneath all uniform a strange single body breaths. Like us, the land our brothers walk upon is like this in which we shall lie. Remember, no men are strange, no country is found, beneath all uniform a single body breath. Like us, the land our brothers walk upon is like this in which we shall lie. So in the first line, the poet says that no men are strange, no country is found. So he is attempting to remove the border from the earth which have been erected to spread different countries. Then only no country will be found. We will fill every country as our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breaths in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. We walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. So we have to don't forget, हमें नहीं भूलना है कि कोई भी इस दुनिया में अलग नहीं है, अननोन नहीं है, और ना ही कोई देश विदेश है. सभी यूनिफॉर्म में एक ही बॉडी है जो सांस लेती है, और उन्हीं की तरह वो लोग भी धरती पे चलते हैं, दूसरे देशों के लोग भी धरती पे चलते हैं, हम भी धरती पे चलते हैं. वो लोग भी मरने के बाद धरती में सोते हैं, हम लोग भी मरने के बाद धरती में सोते हैं. So the word is strange here, and the meaning of word is unique, strange, unknown, and meaning of beneath is there under. So on beneath all uniform, सभी यूनिफॉर्म के नीचे एक ही बॉडी है, सिंगल बॉडी ब्रेथ लेती है, सांस लेती है, जिनती है. Yes, next one is there. We are going to do this stanza second, and before that we have to do the literary devices of the stanza first. So body breath, this is alliteration, and enjambment used here line 1, 2 and 3. Then now second stanza. Yes, they too aware of sun and air and water. वो लोग भी जानते हैं सन के बारे में. दे आर टेकिंग सनलाइट, दे आर टेकिंग एयर एंड दे आर टेकिंग वाटर.
those belongs to the other countries. So they belongs to, yes, they refer to those people who belong to other countries. So they aware, they know about sun, they know about air, and they know about water. They are getting these all things and are fed by peaceful harvest, by wars long winter start. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. So they refers to the people of the other countries, and they are aware about sun, air and water. वो लोग भी जानते हैं सूर्य के बारे में. They are also getting sunlight, they are also getting air, they are getting, yes, they are inhaling, they are taking oxygen, and they are releasing carbon dioxide. They all have the same way. Next one is there. The poet says that nature has given all the bounties to all people also, just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air, and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. We all do farming during the time of peace and when there is no war. And we live in relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we starve during the wars and winter time is the same for those belonging to other countries. So how can we say we are the different people? We are working like them, they are working like us. They are eating like us, we are eating like them. So how can we say these are the different things? Nothing is different here. So we all are getting all bounties of nature. प्रकृति के जितने भी उपहार हैं, प्रकृति की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, वो हम सब ले रहे हैं. हवा हम लेते हैं, हवा वो लोग भी लेते हैं. वाटर हम पीते हैं, वो लोग भी पीते हैं. सनलाइट उन्हें भी चाहिए, सनलाइट हमें भी चाहिए. सो हाउ कैन वी से कि वो लोग डिफरेंट हैं. जो वॉर्स विंटर एलिट्रेशन यूज्ड वॉर्स विंटर में, एंड इंजॉयमेंट यूज्ड इन लाइन 1, 2 and 3. So stanza 3. Remember, they have eyes like us that wake. कि याद रखो कि उन लोगों के पास भी आंखें हैं जो जागती हैं. That wake up, हमारी तरह, और स्लीप सोती हैं हमारी तरह. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न, और उनके पास भी ताकत है, स्ट्रेंथ है जो जिसे जीता जा सकता है. किसको? बाय लव, प्यार से. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. हर एक धरती पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, हर एक धरती पे जो लाइफ है वो कॉमन है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. हर किसी को इसे समझना चाहिए. देयर शुड बी नो फाइट बिटवीन अदर कंट्रीज. So we should live like brother and sister. So stanza 4. Let's remember whenever we are taught. Let's remember. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy. So if anyone is saying to us that कि हमें दूसरे लोगों से, दूसरे देश के लोगों से घृणा करनी है, हेट करनी है, तो वो लोग या वो जो इंसान है, वो आदमी जो है, वो हमारा दुश्मन है. टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ, तो वो गलत कर रहा है. दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस बिट्रे कंटेम. इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों को डिप्रीव आवर सेल्फ, हमें सभी चीज़ों को ख़त्म करने देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, बिट्रे, धोखे को. यस, एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. इस तरह की बेकार की बातों से हमें दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन इन to be our enemy. All peoples, all world's peoples are our brother and sisters. There is no enemy. हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है. During a war, both the parties must bear the loss. जब युद्ध होता है तो दोनों देशों को हानि होती है. And that is why the poet says that. और इसीलिए कवि कहता है क्या? That war is not in our favor. कि युद्ध हमारे लिए नहीं है. So next one is the stanza 5. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage innocence. Of air that is everywhere our own. Remember, no men are found and no country is strange. So it is human earth that we defile. So we should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty. Because weapons kill the people and their bodies which fall on the earth
make it dirty. So जब हम युद्ध के लिए हथियार उठाते हैं, हम दूसरे देश के लोगों को मारते हैं या हम अपने लोगों को मारते हैं, तो इससे धरती डर्टी होती है, गंदी होती है. And whenever war happens, और जब कभी युद्ध होते हैं, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and to make it impure. So these dead bodies are making our earth impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty, that is pollute and outrage the purity of the air. So with all these things, the poet wants to give us the message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that, remember, no men are found, no country is strange. So we should live in this world like brothers and sisters. No men are unique. कोई भी अलग नहीं है, सभी हम एक हैं. और हम सबको एक ही बन के रहना चाहिए. हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए. हमें एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करनी चाहिए. So this was the poem. Hope you got it. Thank you. Have a nice day. Have a pleasant day.